असम में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को कुल 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसमें सरकार की निर्धारित 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के साथ साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहत प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने नियमों में भी अहम बदलाव किया है। अब मुआवजा पाने के लिए पोस्टमार्टम अनिवार्य नहीं होगा। इसके लिए केवल संबंधित सर्किल अधिकारी यानी कि सर्कल ऑफिसर का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके अलावा बाढ़ में लापता हुए और 1 महीने तक जिनका कोई पता नहीं चलता, उनके परिजनों को भी सर्कल अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत व पुनर्वास का कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ जारी रहेगा। सरकारों পৰা পোৱা 4 लाख टকাৰ উপৰিও मुख्यमंत्री साहाय्य पुंजिर পৰা অতিৰিক্তকৈ 5 लाख टका लाभ কৰিব। আমি 4 लाख टका আগবঢ়াও, কিন্তু পোস্টমৰ্টেম নোহোৱা বাবে এই 4 लाख टकाও বহু লোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়াৰ পৰা বানত আক্ৰান্ত লোক বানত মৃত্যু হোৱা লোকক সাহায্য দিবৰ বাবে আমাক কোনো পোস্টমৰ্টেমৰ প্ৰয়োজন নাই। মাত্ৰ সাৰ্কুল অফিচাৰে সাৰ্টিফিকেট এখন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই 4 লাখ টকা চৰকাৰৰ সাহায্য তেওঁলোকে লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ এতিয়া বানত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ পৰিয়ালে 4 লাখ টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা পোৱাৰ ৰাস্তা আজি প্ৰশস্ত হ'ল। যোনে পোস্টমৰ্টেম কৰা নাছিল, পোস্টমৰ্টেম কৰা সকলে ইতিমধ্যে এই ধন লাভ কৰিছে। এতিয়া হল মই আৰু এটা ঘোষণা কৰিব খুজিছো, সেইটো হল যে এই যে বানত আক্ৰান্ত হৈ 61 গৰাকী চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট জিলাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু ৰাজ্যৰ বাকী অঞ্চলতো আৰু 6 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এই আটাইকেইটা পৰিয়ালক আমি আৰু অতিৰিক্তকৈ 5 লাখকৈ টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। অৰ্থাৎ বান আক্ৰান্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মৃতকৰ পৰিয়ালে চৰকাৰৰ পৰা পোৱা 4 লাখ টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্তকৈ 5 লাখ টকা লাভ কৰিব।